السلام علیکم سب کو. ویلکم ٹو عام بات عمر کے ساتھ. پچھلے کچھ عرصے سے جو کرکٹ ٹیم کے ساتھ کرکٹ کے اندر خیر پورے ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، لیکن آج ہم اسپیسیفکلی کرکٹ کی بات کریں گے اور کیسے ایک سپر اسٹار ان دا میکنگ کو ویو ریڈیوسڈ ٹو میڈیوکریٹی، اس کے اوپر بات کریں گے. ایک تھوڑا سا ٹائم لائن سے دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ میں اپنی لینس سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی لینس ہے، 13 لیول تک ہارڈ بال ضرور کھیلی ہے، اور انٹینسٹی جو سپورٹ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے اور جو ٹیمپرمنٹ ہونا چاہیے ایک سپورٹس مین کا، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میرا جو لنک ہے عام آدمی کے ساتھ، آئی لائک ٹو تھنک کہ آئی واچ اٹ فرام اے لے مینس پرسپیکٹو. نو پروفیشنلزم، نو ٹیکنیک وائز، نو سارٹ آف کہ یہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے، یہ اسے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ جا کے جو ہے وہ کنٹینیوسلی لیگنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں. صرف سمپل پلین لے مین پرسپیکٹو سے پاکستان کرکٹ کا ایک سکوپ پچھلے 10 سال کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2015 سے. میں تھا غالباً کوئی 12 سال کا، اور 2015 سے شروعات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں کرکٹ دیکھتا تھا لیکن کھیلنے پہ زیادہ فوکس تھا میرا، بیکاز میں یو کے رہ چکا تھا اپنی زندگی کے شروعات کے اندر کافی حصے میں. تو وہاں پہ میں پروفیشنل کرکٹ کو اپ انٹل انڈر 14 لیول تک میں نے اس کو دیکھا بھی ہے اور کھیلا بھی ہے، کھیلا زیادہ ہے. بٹ وہاں سے میں پھر پاکستان شفٹ ہو گیا اور اسٹڈیز کی طرف ذرا زیادہ دھیان ہو گیا. 12-13 سال کی عمر میں جب سے کرکٹ دیکھنا زیادہ شروع کی اور کھیلنا کم کی، تب سے ایک لینز میں جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 2015 کے ورلڈ کپ سے شروع کرتے ہیں. 15 کا ورلڈ کپ جیسے کہ آپ کو پتا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں تھا، فیبرری مارچ میں کھیلا گیا تھا. اور جسٹ بفور دا ورلڈ کپ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک ریلائبل اوپننگ بیٹسمین جو کہ پاکستان پچھلے 3-4 سال سے کیری کر رہا تھا، محمد حفیظ کی شکل میں، اس سے محروم ہو گیا تھا. بیکاز اینڈ دیٹس آلسو کویشچنیبل کہ اس کو نکالا کیوں تھا، بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ ریمبر کہ بیٹنگ ہی اس کا مین پروگرس تھا. ہی واز اے بیٹنگ آل راؤنڈر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ہز کریئر، شروعات جیسے بھی اس نے کی ہو. بٹ اس کی بولنگ ایکشن سسپیکٹ ہوتی ہے، اینڈ فار دیٹ ریزن پاکستان ڈیسائڈ کہ ہم نے اس کو آل ٹوگیدر ہم نے کیری نہیں کرنا. اینڈ سیم گوز فار سعید اجمل ایز ویل. اس کا بولنگ ایکشن رپورٹ ہوتا ہے، and he is also out of the World Cup. So Pakistan comes up with a relatively weak squad. Let's absolutely be clear about that. تو ورلڈ کپ میں شروعات تو ہماری ویک اسکواڈ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کافی سارے جو ہیں وہ نامی گرامی نام ہوتے ہیں. افریدی، یونس خان، مصباح الحق، جو کہ اتنے عرصے سے کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں کہ جو ٹیم کو سنبھالا دے سکتے ہیں. اوپننگ میں بھی احمد شہزاد اب پچھلے 6 سال سے پاکستانی ٹیم کا حصہ رہے ہیں، T20 ٹیم کا، پھر ون ڈے ٹیم کا، پھر اس کے بعد ناصر جمشید، ٹھیک ہے، پھر سرفراز احمد وکٹ کیپنگ کے لیے دیکھے جا رہے تھے. کامران اکمل کے بعد ایک بڑی ٹرانزیشن تھی، لیکن ایک ٹرانزیشن بھی تھی اور ایک ایکسپیرینس کا اچھا بیلنس تھا. بولنگ ہماری ریلیٹیولی ویک تھی اس ورلڈ کپ کے اندر، یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، بیکاز ہمارے جو سپر سٹارز تھے کچھ اوور آل اس ٹائم پاکستان میں کرکٹ کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ بس ابھی انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان واپس آئی نہیں تھی، اور ڈومیسٹک کا بھی کوئی اسٹرکچر جو ہے وہ اس ٹائم خاص پلیئرز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر تک لانے میں مدد نہیں کر رہا. تو شروعات ہوتی ہے ورلڈ کپ کی، اور پہلا ہی میچ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اور پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے انڈیا سے شکست کھاتا ہے. انڈیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 300 کے قریب سکور کرتا ہے، اور اسے کہتے ہیں بآسانی جو ہے وہ 70 آؤٹ رن سے پاکستان کو ہرا دیتا ہے. اگین اس میں ڈیبیٹیبل بات ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ یونس خان، جنہوں نے زندگی میں اس سے پہلے غالباً صرف 2 دفعہ اوپن کیا تھا اس طرح کے بڑے میچ سے پہلے، اور اتنے بڑے پلیئر کا ریشفلنگ جو ہے وہ پاکستان نے کی، اور ڈیفینیٹلی ان کو میسج کنوے کیا گیا ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ a player at such a stage and that big of a name has to be comfortable while they're playing. Clearly نظر آ رہا تھا کہ یونس خان comfortable نہیں ہے throughout that World Cup. And the reason why I'm bringing this point up because it seems like a pattern. تو ہم اس کو آگے جا کے بھی مزید دیکھیں گے، آگے بابر کے کیس میں بھی، جو آج جس کا ہمارا مین مقصد ہے اس کو ڈسکس کرنا. لیکن یہ صرف ایک شروعات ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اگلا ہی میچ کھیلتا ہے اپنا ویسٹ انڈیز کے ساتھ، اینڈ اگین وہ جو ایک پرولیفک سکور کارڈ تھا وہ ہم نے سب نے دیکھا ہے. اور رات کو 3-3 4-4 بجے اٹھ کے وہ میچز دیکھنا پاکستانی ٹائم کے مطابق، اینڈ پاکستان ایبسلیوٹلی آخری 7-8 اووروں میں loses the plot with the ball, and then they have to chase 310 311 odd. They get reduced to 1 for 4 and then 25 for 5, and eventually again I think by 150 160 odd runs Pakistan loses that game very comfortably, and now they're hanging on the edge with the batting display. خیر پاکستان تھوڑا سا ریکور کرتا ہے اور اس کے بعد 4 بیک ٹو بیک میچز جیتتا تو ہے،
और ये है कि उसके अंदर भी बॉलिंग को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, बिकॉज पाकिस्तान मैनेजेस टू barely beat Zimbabwe by scoring about 235 to 40 odd runs, जिसमें वहाब रियाज की एक कंट्रीब्यूशन थी. फिर उसके बाद उसे क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी 232 का टारगेट था. डिविलियर्स वाज गोइंग berserk, बट पाकिस्तान bowled well. बट फोकस ये है कि जी बॉलिंग ही हमें मैचेस वहाँ पे जिता रही है, और वो भी अगर हम कुछ जीत रहे हैं तो चेस भी हमारा जो है वो 230-40 के आसपास ही रह रहा है. खैर वर्ल्ड कप जर्नी खत्म होती है, क्वार्टर फाइनल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया से हम हारते हैं. वो भी डिबेटेबल है कि अगर राहत अली वो कैच ना छोड़ते क्या फ़र्क पड़ता. आई स्टिल थिंक कि ऑस्ट्रेलिया वो कैच हो भी जाता. पाकिस्तान के लिए वो एक टफ पूल था, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के अंदर ही तो होम टीम का प्रेशर भी होता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम फिर नॉकआउट्स के अंदर. पाकिस्तान की जर्नी खत्म हो जाती है. एंड विद दैट the ODI careers of some of the greats, Shahid Afridi, Misbah Haq, Yunus Khan also quietly but slowly comes to an end. फिर बारी आती है जी कैप्टनसी ट्रांजिशन की, टीम ट्रांजिशन की, एंड कैप्टनसी जो है उसके लिए फ्रंट रनर उम्मीदवार निकलते हैं जी अजहर अली. Now I like Azhar Ali. I absolutely agree that he has done great services for Pakistan, and especially in the test team. Him and Asad Shafiq, after Misbah and Yunus left, it was a very big void, but they sort of held it together. And Azhar Ali as well, his own personal batting performances during his captaincy tenure, were really, really good. But despite that, Pakistan loses a away series to Bangladesh, and they get whitewashed there 3-0, and they also lose the T20 game there as well, despite Azhar Ali scoring really, really well. And Bangladesh comfortably oozed past Pakistan. और इसी दौरान जो है वो एक यंग टैलेंट लाहौर से पाकिस्तान के लिए डेब्यू करते हैं, बाबर आजम, अराउंड अबाउट May 2025, and on debut he scores a 50 against Zimbabwe, and this was the historic series where Zimbabwe toured Pakistan after a gap of no international cricket for the last 6 years, and he scores a 50 on debut. Now he straight away catches eyeballs because of the 50 on debut, and he's now continuously carried across with the team during Azhar Ali's captaincy as well. And he starts to show shades of a good batting personality and good traits of a very good batsman. इसी तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी टीम के साथ कैरी होते हैं बाबर आजम. बट ये है कि अभी उनका फोकस जो है वो उस तरह से नहीं हमें दिखाई देता जिस तरह यंगस्टर्स होते हैं. शुरू में उनका प्रेशर भी होता है. डिस्पाइट दैट he plays against England as well later on in the year, which is eventually Yunus Khan's last ODI series as well in that year. And during Azhar Ali's captaincy, although he personally, like I said, played really, really well, and Babar Azam as well was starting to shape into a good batsman. Maybe because of the transition of the team, because the team was starting to move away from old faces like Yunus Khan, Shahid Afridi and Misbah Haq. कह सकते हैं कि वो टाइम मुश्किल था कैप्टनसी के लिए. पाकिस्तान उसके बाद टूर्स करता है इन द कमिंग ईयर्स. पाकिस्तान उसके बाद टूर्स करता है टू इंग्लैंड, टू ऑस्ट्रेलिया, एंड पाकिस्तान जो है वो उस तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, बल्कि बहुत बुरे तरीके से सीरीज जो है वो हारता है. अब बाबर आजम स्कोर तो कर रहे थे, लेकिन उस तरह से शायद नहीं कर रहे थे जिस तरह सबकी एक्सपेक्टेशंस थी, या बिकॉज ही वाज आल्सो अ यंगस्टर, पीपल वर मेकिंग श्योर कि ही स्कोर्स हेवीली before actually entering the international team, because अभी हम एक experience करके हटे थे with Umar Akmal and Ahmed Shahzad, and a lot of people argued कि because they got fame a little bit too early, it got to their head, and that's another debate and another question for a whole different time. But saying they were being a little bit careful with Babar Azam, and cut to the point कि Babar Azam says कि मेरा first जो सेटबैक है या फर्स्ट रियलाइजेशन है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे अच्छे से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा. दैट्स द 2016 T20 वर्ल्ड कप व्हेन ही इज लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड. एंड एवर सिंस देन अप until now, after that in every single ICC and ACC event, Babar Azam has been a part of Pakistan. So एक बात तो है कि उससे बाबर आजम ने अपने आप को ईयरमार्क तो कर लिया था कि अब दोबारा नहीं. खैर दुनिया को बाबर आजम ही टेक्स देम बाय स्टॉर्म फ्रॉम द पाकिस्तान वेस्ट इंडीज series in 2016, late 2016, early 2017, where he scores 3 back-to-back ODI centuries, becoming the first Pakistani after Zahir Abbas to achieve this feat. And after that, यहाँ से हम officially कह सकते हैं कि बाबर आजम arrived in international cricket, although there were still question marks on his performances from other formats including T20 and including tests. One day में उसके बाद से आप कह सकते हैं कि he actually never looked back, because पाकिस्तान उसके बाद जाती है ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे सीरीज के लिए, एंड अगेन ही बिकम्स द फर्स्ट बैट्समैन
after so many years, after Zaheer Abbas, the great Zaheer Abbas, I think after early 1980s, to score a century against Australia in Australia. अब मुझे पकड़ने लेना इस बात पे, I don't know if it was Zaheer Abbas or not, but after a very long time, a Pakistani batsman scores a century against Australia in Australia, and again he straight away catches eyeballs, and he does that in the 5th ODI against Australia in Adelaide. But खैर पाकिस्तान वो सीरीज फिर हार जाता है, and this is sort of the series as well where it seems like अजहर अली की भी कैप्टनसी में फाइनल ले लेने कॉफिन चढ़ दिया जाता है, because after that he is relinquished from his duties and the ODI team steps into a new era. This new era begins under Sarfraz Ahmed, and his first big assignment is the Champions Trophy in 2017. और हम सबको ही पता है कि Champions Trophy के अंदर पाकिस्तानी टीम ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, and it was actually, I could argue, the first tournament that Pakistan has actually won within a collective team effort point of view. Now don't get me wrong here, I'm not questioning the 1992 or 2009 World Cups, but अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं तो 2017 Champions Trophy वो वाहिद Champions Trophy है, and ICC event for that matter, where every single member of the team has played a crucial role in throughout the tournament. उससे पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान ने टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं कि राइट मोमेंट पे राइट पीपल ने पीक किया है, 3-4 people at a time in a team. But 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके अंदर पूरी पाकिस्तानी टीम, from the top order to the middle order to the bowlers to the finishers, absolutely everybody performed, and it was a landmark and probably the biggest in the last 10 years for Pakistan, biggest achievement. And उधर से एक नया एरा शुरू होता है सरफराज अहमद के अंदर, and also this new team. मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान इंडिया वाले पहले मैच के बाद बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाने के बाद स्टार्ट ऑफ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड द बॉलिंग क्लिक स्ट्रेट अवे देयर. हसन अली, मोहम्मद आमिर, they all bowl really, really well and restrict South Africa to a low score. But it's a rain-reduced game, and Pakistan win by around about 19 runs on Duckworth Lewis. But again, the batting clicks as well to keep Pakistan ahead of that Duckworth Lewis despite the rain, and the bowling has done exceptionally well as well to give Pakistan that advantage in the end. Then comes the Sri Lanka game. Once again, bowlers bowled really, really well, especially during the middle overs, and then Pakistan get off to a prolific start. Opening partnership goes past 50, but then they have a little bit of a collapse in the middle, and then we all know that famous partnership between Sarfraz and Fahim Ashraf first. I'd like to point that out, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि it was a very, very good collective team effort, and then eventually Mohammad Amir के साथ. And then comes the semi-final, and Pakistan probably arguably plays the best game of the tournament so far. Bowlers reduced the number one batting side at that time, and number one probably ODI team in that time as well, England, in their home conditions, to around about 215, and then the batsmen come out, century plus opening stand hota hai, phir Babar aata hai, he plays 38 not out, again solidifying his position there at that number 3 slot. And yahan pe obviously credit baki team ko bhi jata hai, because I know at that point Hafiz also sacrificed his one down position from which he was batting on. Mickey Arthur identified Babar Azam as the talent and as the future for Pakistan, and he made way for him. So collective efforts हैं बाबर आजम को बाबर आजम बनाने में सब के, but equally today where we stand हम सब का collective effort भी है उसके अंदर भी, so I'll come to that as well. खैर पाकिस्तान फिर उसके बाद फाइनल खेलता है इंडिया के खिलाफ, and again an absolutely perfect game. First of all 120 odd partnership, opening partnership, then Babar Azam comes out, he scores 46 odd as well, and Pakistan comfortably go past India, bat really, really well. Hafiz plays an absolutely brilliant cameo, takes Pakistan to 338, and Pakistan bowl out India for 158 and win by 180 runs. And wahan se Sarfraz Ahmed and the young Pakistani team really, really take off in the years leading up. Now, अब इस era की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, because इसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, especially in the shorter formats. Tests में हमने फिर भी struggle किया, but in the shorter formats, in one days and T20s, after that we whitewashed Sri Lanka in the UAE 5-0. उसमें again Babar Azam scores 2 centuries once again, and then उसके बाद we go on a streak of 11 T20 international series continuously, जिसमें मेरा ख्याल है कि if I'm not wrong 9 series में Babar Azam is the leading run scorer, and the series are in a combination of countries including the UAE predominantly वहाँ पे, but Pakistan इस दौरान एक ट्राई सीरीज भी जीतता है against Australia in the final, and once again Pakistani team is looking in really, really good shape. और फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप. पाकिस्तान के लिए शुरू तो अच्छा नहीं होता, because Pakistan gets absolutely thumped by the West Indies in the first game, और around about 100 Pakistan all out हो जाता है, and West Indies comfortably chase that as well, and Pakistan's morale is very, very low.
But then comes the England game, और इंग्लैंड से इससे पहले पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज एक खेला हुआ था और 4-1 वो सीरीज हारा था the previous year. But and Pakistan was on a 10-11 match losing streak as well at that point in one day internationals. Around about इतना लंबा तो था ही वो streak. 9-10 matches का तो वो short था. Match में Pakistan plays really well. They score 348 odd batting first. Contributions all round from Fakhr, from Imam, from Babar, from Hafiz, who scores an 80 odd as well. But again, that's the first game in which Pakistan truly clicks. And Pakistan end up beating England and getting their first victory of the tournament by 15 runs, Galban, and Pakistan is on the board in the World Cup. But again, Babar plays a crucial role here. He scores 60 odd, coming in at number 3 and really solidifying Pakistani batting and moving on to a big score in that game. उसके बाद एक rained out affair होती है श्रीलंका की against in Bristol, which eventually somebody can argue as well कि पाकिस्तान को semi-final का spot cost करती है, because Pakistan still to date has not lost any single World Cup game against Sri Lanka. लेकिन उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का मैच, एंड ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर भी पाकिस्तान स्टार्ट रियली पोरली. 100+ की ओपनिंग पार्टनरशिप होती है ऑस्ट्रेलिया की इन रिलेटिवली गुड बॉलिंग कंडीशंस. एंड उसके बाद फिर पाकिस्तान रिकवर ज़रूर करता है. आमिर एक 5 विकेट हॉल लेता है, एंड बॉलिंग के अंदर इट कैन बी आर्ग्यूड इज प्रॉब्ली द ओनली शाइनिंग लाइट इन पाकिस्तान टीम ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड कप. और फिर ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो चेस करना शुरू करता है. 308 का टारगेट पाकिस्तान को मिलता है उस मैच के अंदर, एंड अर्ली ऑन फखर आउट हो जाता है. बट उसके बाद एक पार्टनरशिप सी लगती है बिटवीन बाबर एंड इमाम. बाबर प्लेज अ रिलेटिवली स्मॉलिश नॉक, बट द इम्पैक्ट ऑफ दैट नॉक is that he again solidifies his class as a prolific batsman. And Pakistan still वो मैच हार जाता है 40 odd रन से. एंड देन कम्स द बिग इंडिया गेम, जहाँ से फर्स्ट टाइम मैं नोटिस करता हूँ कि जो पाकिस्तानी बैटिंग में एक पैटर्न नजर आना शुरू हुआ. वहाँ से वो पैटर्न मैं समझता हूँ कि शुरू हो गया इंडियन मैचेस के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने फिर उसके बाद प्रेडोमिनेटली एक ही पैटर्न के साथ खेला, स्पेशली इन दी ओडीआई वर्ल्ड कप्स एंड ओडीआई गेम्स. और जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करता है, एंड आई डोंट थिंक इट वाज अ बैड डिसीजन बिकॉज इट वाज ओवरकास्ट कंडीशंस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान एक रन आउट अपॉर्चुनिटी मिस करता है अराउंड अबाउट द 9th ओवर. They fumble up, they mix up ends, and वहाँ से फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगती है उनकी ओपनिंग की 100+ की, and then Rohit Sharma scores 140 odd as well, and India end up with a good score of 330 odd. फिर आती पाकिस्तान की बैटिंग की बारी, और जो पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान loses an early wicket in the shape of इमाम उल हक. अब उधर से लेके up until the score of 117, 113 रन की पार्टनरशिप लगती है, 104 रन की पार्टनरशिप लगती है बिटवीन बाबर एंड फखर जमान. एंड उसके बाद सबने देखा है कि वो बॉल पड़ती है बाबर को, एंड इट वाज एब्सोल्युटली मैजिकल डिलीवरी, ट्रूली इन ऑल एसेंस. कुलदीप यादव बाबर आजम को बोल्ड करते हैं, एंड द पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट इज एज सून एज बाबर की विकेट फॉल करती है, सो पाकिस्तान गोज फ्रॉम बीइंग 117 for 1 एट वन स्टेज टू being reduced to 129 for 5. और उसके बाद पाकिस्तान वो मैच जो है वो बआसानी इंडिया उनको शिकस्त दे देता है. एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इन द वर्ल्ड कप, at this point Pakistan is on the brink of elimination. Now Pakistan plays really well, wins all the remaining games against South Africa, against New Zealand, against Afghanistan, and then lastly against Bangladesh as well. And you know who the most prolific batsman and the most prolific scorer and the best player for Pakistan is during the tenure of those games? जी हाँ, बिल्कुल सही, बाबर आजम. सो बाबर आजम साउथ अफ्रीका वाले मैच में अगेन 60 आउट स्कोर करते हैं एट लॉर्ड्स. ही सॉलिडिफाइज द पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान की विन में कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं. एंड बेयर इन माइंड दिस पाकिस्तान से खेलते हुए बाबर आजम का पहला ऑफिशियल वर्ल्ड कप है. ही प्लेड इन 19 वर्ल्ड कप्स बिफोर, बट इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप, एंड ही स्ट्रेट अवे then goes on to score a match winning century, जिसके लिए आज तक बाबर आजम को जाना जाता है. वो न्यूजीलैंड वाला गेम 101 not out in difficult conditions in Edgbaston. Rank Turner's ball was turning well as well, low pitch thi. And then again in the Afghanistan game as well, he plays a good knock of 45 odd. He gets out and Pakistan starts to collapse, but eventually Pakistan वो मैच जीत जाता है. And then lastly, in the last game as well against Bangladesh, he scores a 96 and gets LBW at Lords. Otherwise, that would have been a century at Lords as well. But prolifically, Babar Azam scores 474 odd runs in that tournament with an average of around 60+ and a strike rate of around 88+ as well. 88 in the high 80s hota hai uska strike rate, and he basically announces himself as Pakistan's next batting sensation after a huge gap
क्योंकि इससे पहले अगर किसी भी बैट्समैन की बात होती थी तो वो या यूसुफ थे या यूनुस खान थे, एंड उनकी भी अगर देखा जाए, उनका करियर देखा जाए तो टेस्ट करियर में ज़्यादा बातें होती थी. बट इन वाइट बॉल क्रिकेट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, he was the first batsman to be talked about after the great Zaheer Abbas or Saeed Anwar. Those sort of names. He was the first name after such a big while. Now, at this point, Babar Azam has broken many records along the way as well, which include, at that point, becoming the fastest to 1,000 runs in ODI cricket, and then, joint fastest now as we stand today to 2,000 runs and so onwards as well. So his ODI batting has never been an issue now, from the point of his start in his career up until now, and moving on as well up until this year recently. It's not a problem at all. और इसी दौरान बाबर आजम को जो है वो T20 की कैप्टनसी मिल जाती है, and his first assignment is an Australia tour where Pakistan loses 2-0, but he personally has a good series with the bat. और यहाँ से अगर हम कहें सही मानों में तो the resurgence या the actual coming to age of Babar Azam, the test cricketer, the white ball player, तो हमें पहले से पता था कि बाबर आजम is exceptional, लेकिन जो एक टेस्ट क्रिकेट में कमी थी, जिस तरह मैंने आगे बात किया कि यूनुस खान एंड Mohammad Yusuf साहब, they were really predominant batsmen in their eras. तो यहाँ से झलक आना शुरू हो जाती, because Babar Azam goes on the Australia tour and in that test series he scores his second test century. Practice game में भी उस series में he scored a century against the PM11, and again he scores a century at the Babar as well, and he scores a 97 as well, and he gets out in his 90s as well. But वहाँ से फिर जो test form है Babar Azam की, because then after that Pakistan come home and then they have a series against Sri Lanka where Babar Azam scores with 200s, then in 2 tests, then we have a series against Bangladesh, and then he scores a century there as well. And so now he has 5 test centuries, and Pakistan are now looking at a really good batsman जो white ball में भी perform कर रहा है और test matches में भी perform कर रहा है, and now Pakistan has somebody they can rely on, in all formats with the bat in hand. पाकिस्तान की bowling से तो हमेशा से कोई मसला रहा ही नहीं था. It was the batting, and now we're starting to get a batting superstar. और फिर आता है कोविड. अब कोविड के अंदर बिल्कुल बंद हो जाती है, and during COVID and just before COVID as well, the captaincy of the white ball formats, so T20 की captaincy तो बाबर को पहले ही मिली हुई थी, वनडे की भी मिल जाती है, and he basically now is the captain for the Pakistan white ball team as well. अब इधर थोड़ा सा पहले रुक के ना बाबर आजम की T20 क्रिकेट की up to this point बात कर लेते हैं. The year is 2020 and बाबर आजम has slowly now solidified himself in all 3 formats of Pakistan, but इसकी white ball अभी भी compared to his red ball is a stronger suit. हालांकि रेड बॉल अब ऊपर आ रही है, now he's scoring runs consistently as well. ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, but that Australia tour left a big mark as well. लेकिन अगर हम यहाँ रुके और हम बात करें तो बाबर आजम has his best season in PSL yet, जो कि पाकिस्तान की टॉप T20 टूर्नामेंट है, जहाँ से T20 टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमें एटलीस्ट बताया जाता है कि बनता है. बाबर आजम कराची किंग्स के लिए ना सिर्फ स्कोर करते हैं बट प्रोलिफिक स्कोर करते हैं, एंड ही एंड्स अप बीइंग द प्लेयर ऑफ द सीरीज एज वेल, प्लेयर ऑफ द क्वालिफायर, प्लेयर ऑफ द फाइनल इन एज वेल इन द मैच, एंड कराची किंग्स गोज ऑन टू लिफ्ट इट्स फर्स्ट PSL टाइटल. अब यहाँ से एक superb transition देखने को मिलता है, because Babar Azam now starts scoring runs for fun in T20 cricket, because he goes away to England as well in COVID, but he plays the T20 Blast there as well. He plays for Somerset. He scores centuries there as well. यहाँ से Babar Azam की जो T20 batting है, जो white ball batting है, just goes to another level. So since 2019 up until now, if I'm not wrong, no batsman has scored more T20 centuries than Babar Azam. एंड अभी भी अगर हम कंटिन्यूसली देखें, बाबर आजम इज सेकंड टू द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल इन द नंबर ऑफ T20 सेंचुरीज. ही स्कोर्ड 11 टोटल अब तक. एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज अभी यहाँ पे एंट्री होने लगी रिजवान की इन द T20 साइड ऑफ पाकिस्तान. लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बाबर आजम हैज बीन एन ओपनर नाउ फॉर द पाकिस्तानी टीम with Fakhar Zaman and with different partners from around about 2018 now and up until 2020, 2021. And यहाँ से फिर जो है ना चीज़ें you can start to take a little bit of change, and now because Babar is a mainstay in the team as well, a little bit more responsibility is now on him as well, which is understandable. New Zealand का tour आता पाकिस्तान का in December, January 2020, and Pakistan goes on the tour, and Babar Azam, if I'm not wrong, he either breaks a thumb on his hand
या he fractures his hand and basically is ruled out of the New Zealand series, जिसकी वजह से जो है वो tests and 3 T20s, 2 tests at that point Pakistan were playing in New Zealand and 3 T20s. Now the reason I'm mentioning this period specifically is because यहाँ पे बाबर तो continuously opening कर ही रहा है, but Pakistan started to try a different opening combination because Babar was not in the team and Rizwan starts to open. Now Rizwan in the final match of that T20 series plays a match-winning knock and guides Pakistan to a victory on that New Zealand tour, the first for them because they end up losing both tests and both T20s before that. And यहाँ से रिजवान की जो एंट्री है एज एन ओपनिंग बैट्समैन वो शुरू होती है और फिर बाबर और रिजवान की जोड़ी बनती है एंड फखर देन नेचुरली ही हैज टू डिमोट हिमसेल्फ इन द बैटिंग ऑर्डर because Babar and Rizwan now solidify and they go on a prolific run in T20 internationals because from then there is no looking back. Babar and Rizwan go on series after series, scoring runs after runs, got to the point where now both are number 1 and number 2 in Pakistani T20 batting number of runs scored. इसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो अप्रैल के अंदर 2021 के अंदर साउथ अफ्रीका का दौरा करती है 3 ODIs and 3 T20 internationals and it goes really successful for both Pakistani team and for Babar Azam. He scores match-winning century in the first game and he scores a 94 in a winning cause in the third ODI. Pakistan win the series 2-1 and record their first ODI series win against South Africa in South Africa misbah ke baad 2013-2014 ke baad. And the first team as well to beat South Africa twice if I'm not mistaken. And उसके बाद आती है T20 सीरीज और यहाँ से जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो बाबर आजम की एक वैल्यू है एज एन इंटरनेशनल T20 प्लेयर एज वेल वो उभर के पूरे तरीके से सामने आते हैं. एंड इससे पहले लीग्स में तो वो परफॉर्म कर ही रहे थे, PSL के अंदर, T20 ब्लास्ट के अंदर, you know, he's continuously scoring runs at a prolific rate. But what happens is in the third T20 international of that series, Pakistan is set a target of 205 Galban and Pakistan chases that down with 9 wickets in hand. It's the same day that Babar Azam recorded himself as becoming the number 1 ODI batsman for the first time and he scores 122 with a 200 plus strike rate and it becomes the first Pakistani captain to record a century in all 3 formats of the game for Pakistan and the third batsman after Mohammad Rizwan and Ahmed Shahzad to score a century in all 3 formats. और इसके बाद जब आजम की इंटरनेशनल T20 फॉर्म है वो भी एक पीक को हिट करती है because after that Pakistan goes away to England और इसके अंदर for the first time after a while we see Babar Azam struggling in the ODI series. In the first 2 games he gets up very cheaply and gets out playing against the in-swinging ball of Saqib Mahmood. You know, he goes for a duck in the first ODI in Cardiff and in the second ODI in Lords as well. You know, he's struggling and this is for the first time that we're seeing Babar Azam struggle in a long while. But जो चीज़ हिट करती है वो ये हिट करती है कि यार ये struggle करता है, he learns on his mistakes though, you know, because आता है third match और उस third match के अंदर in Edgbaston, Birmingham, he scores 158, you know, which is to date his highest score in ODI cricket. And unfortunately Pakistan वो मैच हार जाती है और वो सीरीज भी हार जाती है. But Babar Azam, the batsman, tells everybody कि you know he is a quick learner, he thinks on his feet, and the captaincy is not affecting him in any sort of way because he's now had tours to Australia, to South Africa, to England, and even in the T20 series as well. In the first game of that T20, Pakistan records their highest ever T20 score, and Babar Azam plays an 85-run knock as well in that. And the batsman Babar Azam is having no issues at this stage. Got to the point कि अब आ गया है 2020-21 का T20 World Cup. बाबर की first assignment as a captain and what a tournament.